स्तोत्र शत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। to their lotus feet my तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद after that my obeisances to Nitya Pravishnam Vishnupad स्तोत्र शत श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव वृंद all the sannyasis हरि कथा the mothers, all of those eager to hear Hari Katha, परम स्नेहशीला मातृवृंद सभियों के चरण to the mothers, so affectionate mothers, to the feet of everyone. Please accept my humble obeisances, everyone. बहुत सुंदर रूप में आज So in a very beautiful way today you भीष्म स्तुति के जो है have presented the glorified the Bhisma Stuti. जोर से Please clap loudly for him. बहुत दिन के बाद सुनने के लिए मिला। So I was so happy that I finally got the opportunity to hear this Bhisma Stuti. और दूसरी बार मैं भी प्रार्थना किया था कि आप So I also prayed, I also asked you to also present Kunti Stuti. Try to also chant Kunti Stuti because you sing so well in such a beautiful rhythm and melody. So I really liked you singing the Bhishma Stuti. श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव In the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, परीक्षित महाराज की कथा श्रवण कराया he told Katha to Parikshit Maharaj. जिससे स्वयं परीक्षित महाराज Parikshit Maharaj himself सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये प्रश्न किया था made a question to Shukadeva Goswami. ये हे ब्राह्मण He asked, "O Brahman, hey Gurudev, कुरुक्षेत्र रूपी महा युद्ध में in this great battlefield of Kurukshetra, my grandfather Pitamaha, तिमिंगल रूपी सेनाओं को कैसे पराजित how he किया defeated these great warriors, like how he defeated in an amazing way these warriors." Who asked this? Parikshit Maharaj. My grandfather Pitamaha. Who is the grandfather of Parikshit Maharaj? Arjun. Arjun is the grandfather of Parikshit Maharaj. मेरे पितामह ऐसे कुरुक्षेत्र रूपी So in this great जिसमें बड़े बड़े battlefield of Kurukshetra, प्रेमी मांस के भी where there are निगलने वाले तिमिंगल कहा जाता Timingli, है Big fish that eats whales. big fish that eat whales. ऐसे Means बड़े बड़े योद्धा this, लोग थे the warriors are ऐसे really, बड़े really बड़े strong. योद्धाओं को कैसे पराजित How he defeated these great warriors. बात ये सही है This is true. कुरुक्षेत्र युद्ध में देखा जाए If you analyze the Kurukshetra war, कौरवों के पक्ष में जितने बड़े बड़े योद्धा थे the warriors in the Kurukshetra, उनके in the पराजित Kauravas करना group, अर्जुन के लिए भी संभव actually नहीं Arjun himself couldn't defeat them. He could not defeat the warriors from the अर्जुन Kaurava के side. गांडीव तक भी Even the Gandiv, उनके the भेद नहीं कर पाए bow of Arjun, wouldn't be able to defeat them. First in the list is Bhishma Pitamaha, इच्छा because he had मृत्यु Icha Mritu Baram, अपने इच्छा the के blessing अनुसार to वो die only when he wanted. छोड़ देंगे So he could die when he wanted. So who could die? Who could kill someone like कुरुक्षेत्र this? की जो आप लोग गीता पढ़ते हैं So you read the Bhagavad गीता Gita. की स्वयं अर्जुन की जो कथा सुन In the अर्जुन Gita, जो दोनों सैन्यों के देख Arjuna, when he saw both armies, सैन्यों लोग भयर मध्य रहता he said, "Krishna, please put my अर्जुन कहने chariot in लगे the amidst हे of the अर्जुन two हे कृष्ण armies." मुझे जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है Krishna said, उन लोग के मैं एक "I बार want to देखना see those who I am इसलिए मेरे रथ facing को in जहाँ this स्थापन war. करो So please put my दोनों chariot in between the two सेनाओं के groups, बीच में स्थापन करो between Kauravas and Pandavas. Senayor Ubayor Madhi Rata Stapito." क्योंकि अर्जुन के मन में ये एक विशाल अहंकार था ये मेरे पास He had one ego. गांडीव है और मेरे साथ स्वयं भगवान कृष्ण है Probably some problem there. मैं सबके पराजित करूं I have defeated everyone. This is the ego that Arjuna had. He had this pride, thinking. और अर्जुन के रथ जब दोनों So, सेनाओं के बीच में When he put कृष्ण लेकर के the chariot between both parties, अर्जुन देख करके Arjun saw शोक में विमोहित हो and he became so sad. He started lamenting. गए He started ये lamenting. सब तो लोग हमारे साथ हमारे गांडीव This- से मर गए All of them are going to die because of my Gandiv, he thought. और इनके जितने भी
सेनाओं की जो पत्नियां जो सब And all क्या the हो wives जाएगा? of these warriors, they will become widowers. हाहाकार मच जाएगा। This will be very great sorrow. संसार में It's probably a problem in the mic. क्या हो गया? Should be okay. I'll try this. हाहाकार मच जाएगा। So it will be a great problem. It will be a great problem चलो मत। They गुरु will- न होत्वा ऐसे because गुरुओं they will को be ऐसे में without husband. How can I kill my superiors, my gurus, जिनके गोद में those who मैंने in whose laps I have बैठ sat, जिन्होंने मुझे those who सुंदर give सोने के me चामच से with मुझे golden मानो spoon, they fed me kheer, sweet rice. Who? भीष्म Who did पितामह। this to Arjun? Was Bhishma गुरु न Pitamaha. होत्वा How can I kill my ऐसे superior, गुरुवर्ग में कैसे my Guru Varga, my elders? How can I kill my elders? है? जो गुरुदेव जिनसे मैं That सारे Gurudeva, धनुष who- विद्या को मैं From whom प्राप्ति किया I have learned all the knowledge of bow and arrow, Dronacharya. इनको कैसे मैं रोक? How can I kill them? How बहुत can I kill सुंदर him? एक कथा जो है This katha is very beautiful. गीता में जो सुंदर In the Bhagavad Gita, it's very beautiful katha. है। इसलिए अर्जुन के हो गया क्या विषाद योग का है। So this called Vishada Yoga means lamenting moment of Arjun. इसलिए पहली अध्याय में ये दिखा है। So this is the first chapter of the इसलिए Bhagavad अर्जुन Gita. स्वयं कह रहे हैं So Krishna himself said, यदि भी मैं भी विजय प्राप्त कर लिया जय कर लिया Arjuna said, ये if राज्य I लेकर मैं क्या करूं? win, what will I do with the उस समय मेरे kingdom? पितामह Because भीष्मदेव भी नहीं रहेंगे, My grandfather will be dead. है? Bhishma Dev will Gurudev be dead. My भी नहीं Gurudev रहेंगे। also will be dead. जितने बड़े बड़े जो देख रहे हैं ये सब All of these great warriors and great personalities, they will be dead after the war. अर्जुन ये सोच रहे हैं मैं So ही Arjuna was जीतूंगा, thinking, सब of course I'm gonna win and be alive, and everyone's gonna die in the war. He was thinking, बहुत सुंदर। very beautiful. इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। So he thought, I don't wanna fight. भिक्षा वृत्ति के द्वारा It's better I just spend my life begging alms. अर्जुन का Arjuna said, भगवान उस समय कृष्ण and अर्जुन के then जो है बहुत Krishna सुंदर gave beautiful instructions to आत्म तत्व Arjuna आदि की बात about Atma Tattva and beautiful फिर अंत में interesting कहने लगे instructions. देखो In the end, तुम क्षत्रिय हो Krishna said that you are a हमारे Kshatriya कार्य है warrior. Your युद्ध का duty is to fight. जय पराजय के उत्तर देखना Don't नहीं think about losing or winning. जय पराजय Don't तुम्हारे think हाथ about में नहीं conquering. This is किसके not हाथ in your में hands. This is in whose hands? विधि के हाथ में In the hands of the destiny, of the providence विधि के of विधान Lord. Vidhi ka vidhan. कुछ कोई उल्लंघन नहीं कर सकता No one can do what is against the desire of विधि the के जो providence विधान of जो God. है वो नियम तय है जस अपजस मान अपमान जितना भी वस्तु है सब किसके हाथ में है So losing, winning, it's on the hands of whom? Tulsidas explains in लाभ Ramayana. हानि लाभ जस Tolerate, जीवन मरण loss, gain, everything is in the hands of God. संसार में Ramayana Tulsidas explains. हम सोचते हैं हम We think, oh, I'm gonna get something, this and that. मान जो ही मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को है सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम भाई विधि किया The way Lord wants to keep you. If you want to get respect, you won't get respect if it's not the desire of God. चाहते हैं हमें गले में We want to get a beautiful garland in our neck, but प्राप्ति होगा भगवान जी only God knows which kind of garland you get. जस अथवा अपजस Are you gonna get fame or dishonor? बात इसी है। Is it true? हम सब चाहते क्या है Everyone wants what? To be respected, जस की माला हम fame, or you win the garland of being respected, honored. garland of name fame You want the reputation। garlands of name, fame, reputation. You want, चाहते नहीं। don't you? सभी एक मन के हृदय में ये Everyone भावना रहता has है this desire in their mind. I want my name to be like everywhere. प्रतिष्ठा आशा Desire for recognition, pratishta, कथम साधु प्रेम नाम name, fame, reputation. Raghunath Das Goswami explains pratishta in the Manashiksha. I'll tell you one story that a saint explains. इंडिया में 150 रुपया के In पंखा खरीद करके मंदिर में दिया so one person bought लेकर 150 महाबली rupees महाराज fan and gave in the temple, and then he told, इसमें नाम लिख दे he said, please put my name because of that. मेरे Which नाम name? लिखो।
write my मेरे name, पिताजी के the नाम name of लिखो my और मेरा father, and नहीं दादाजी के नाम in the name of my grandfather. पंखा घूमते रहेंगे ना Because the fan, कितने के नाम हम पढ़ेंगे so how many names तीन are there? Three तीन पीढ़ी के names, नाम सुनते 3 generations name because of the fan दिया he कितना gave. पैसा So how much he paid in the fan? 150 रुपया 150 rupees. And then you know the three parts of the fan. दादाजी घूम रहे Oh, हैं his father and his grandfather, they're moving like पिताजी घूम रहे हैं in circle, and me too. In the temple, we put our names, mark it, and also he thought I want to also put the name of my son in the. But how many? How can in English this? Blades. 3 blades of the fan. तो तीन पुरुष हमारे So 3 generations will be moving in the temple in the blades of the fan. So if I get a 4th generation, if I get a fan with 4 blades, then I can put also the name of my son. That will be very nice. वाला वृंदावन विहार भाई ये भी क्या है What is this? लिख देते हैं So people want to write their names in the temple when like this. दान नहीं किया कहते हैं, महाराज मेरे जो है You 50 give, रुपए मैं दे रहा हूँ oh Maharaj, I'm giving 50 rupees in the temple. Please put a marble plate here on the wall here of the temple saying, mentioning my donation. People are like this. चलो हम इसलिए करें Anyway, इधर तुलसीदास जी करें Tulsidas is saying, Tulसीदास Tulsidas is saying, पाएगा होगा प्यारी वही you जैसी want to get respect, you won't get if it's not the desire of God. Only what will happen is what is the desire of Bhagavan. Everyone wants name, fame, reputation. Everyone wants it. What you only get, जो हमारे पूर्वजन्म में मैंने whatever is प्राप्त predestined according to your prarabdha karma from previous lives. Only that will come. चलो Anyway, भगवान कर रहे हैं अर्जुन तुम जो so अहंकार कर रहे Bhagavan हो is saying you are very proud, पितामह के मैं इसे thinking कैसे that you're going to क्या तुम पितामह को conquer मार your सकते हो? grandfather. Do you think you can really तुम जानते win हो? over your grandfather? You think ये you can भीष्म conquer him? पितामह जिसके पास क्या Bhishma वर है? Pitamaha has which blessing? इच्छा मृत्यु वरण है Icha Mritu Baran. He वो can die अपनी whenever इच्छा he के wants. अनुसार वो मृत्यु पाम सकते हैं He can die जब whenever तक he वो wants. प्रधान सेनापति रहेंगे And if he becomes if he continue commander-in-chief, उस पद पे आ नहीं सकते no one can take him out of that position in the war. तो यही तो नियम हुआ That's the rule of the war. 10 दिन के लिए For 10 days, भीष्म पितामह Bhishma Pitamaha, he was कुरुक्षेत्र के युद्ध the में commander-in-chief of the सेनापति के रूप में army ही of the Kauravas. और जब तक वो रहे And until he was still in that position, दूसरी की भी ना आ सकती no one would be able to take that position or conquer. So can you really conquer him? You're thinking that you're gonna kill him. Like, how can I kill my grandfather? First of all, can you really kill him? Tell me, Krishna asked. Another point. क्या तुम्हारे पिता के गुरु द्रोणाचार्य जी को तुम हरा Can सकते you हो also defeat your Guru Dronacharya? विचार करके देखो। Think about it. तीसरी Third point. कर्ण What about Karna? जिसके पास है क्या He has कवच the kundal and the कवच और kavach, the armor and earrings, very special. कवच और कुंडल If he जब has तक that रहेगा, तुम्हें special जितने भी earrings and ब्रह्मास्त्र armor, के जो कुछ even भी the बाण Brahmastra मारो, cannot, and arrows, nothing can pierce his body. बात ये सही है कि It's true or not? असत्थमा Aswattama. जिसके पास क्या वर है So which benediction he चार had? युग तक That वो he will be alive for 4 eras, 4 yugas. Ashwatthama. हैं? आज तक भी असत्थमा जी Until nowadays, Ashwatthama is still alive according to the scriptures described. और यहाँ तक भी भविष्य पुराण में भी And ऐसे according to लिखा Bhavishya गया Purana also is described that कि इसके बाद जो दापर युग में in Dwapara कब Yuga, आएगा the next Dwapara Yuga will come, ये भीष्म क्या बोले असत्थमा Ashwatthama व्यास बनेंगे will become the next Vyasadeva. आज ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है The scriptures describe this. क्या असत्थमा के तुम मार सकते हो Can you really kill Ashwatthama? तुम चिंता नहीं Think about it. Reflect about that. जितने बड़े बड़े ये सेना All लोग these ये great देख रहे हो, warriors that you're seeing, इनके हराने इतने सहज you नहीं cannot, it's not easy to defeat them. है। और जब तक ये समस्त जो सेना लोग एक मानव And परकोटी की बात है They're just like walls, सारी तरफ दीवार 4 के walls भांति लोग हैं। around,
Like these great warriors are just जैसे like four चैत्र great की walls. दीवारें You see the four हैं, walls? हैं? Like a और fort. उसी दीवार So में these देखो walls, ये सब दीवार के so वहां they से are walls. ये लोग हैं, इन लोग के हराना कोई It's संभव not नहीं। easy, it's impossible to क्या करोगे? defeat them. What are you gonna do? तुम जो कह रहे हो, You're thinking, you're saying this. इसमें जय पराजय के So चिंतन don't think छोड़ about करके winning or losing. तुम क्या करो? What you have to do? तुम युद्ध करो। You have to तुम्हारे fight. कर्तव्य है। This is your duty. कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध The करो। duty, your duty is to fight. भगवान ये शिक्षा भी So देते हैं। Bhagavan is teaching us, युवा समाज की भी शिक्षा भी teaching देते for हैं। the youth, young generation as well. तुम अपने कर्तव्य पालन You करो। have to follow your duty, that's it. सब बोलो। अपने जीवन की कर्तव्य पालन You have करो। to follow the duties of जय your life. पराजय लाभ Don't think about gain, loss, हानि conquer, उसके तरफ defeat. Don't look at that. Like, मान don't think भगवान about की that. तरफ देखना Don't नहीं। think about honor, dishonor as well. अपने कर्तव्य You को have to पालन follow your duties. करो। और अंत में भगवान And क्या in the करें? end, Bhagavan said, सर्वधर्मान Sarvadharmam Pariteja. परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा। मेरी शरण में आ जाओ। You have to come to my shelter. जो कुछ है मेरे ऊपर छोड़ दो बस। Rely on me only. बात ये सही है क्या? This is true or not? ये युद्ध क्षेत्र जो है आप जो देख रहे, मैंने अपने को बताया, ये साधारण नहीं है। So this battlefield is not मेरे ऊपर ordinary. छोड़ दो बस। Just rely on me. That's it. तुम अपने पर कुछ मत रखो। And don't think, don't worry. Krishna says, Sarvadharma Pariteja. शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा। बहुत सुंदर गीता की Very beautiful. चरम This last उपदेश instruction of the Gita, Sarvadharma Pariteja. भगवान की तरफ छोड़ दो। You have to surrender to Bhagavan. That's it. No need to do anything else. ये शुक्ला जी ठीक है कि नहीं? Shuklaji, okay? You okay? Yes, that's it. You only need to do that. बहुत सुंदर। Very beautiful. ऐसे बड़े बड़े वीर को कैसे पराजित करना, कैसे करना, ये मेरे पास है। So I know how to defeat these great warriors. Krishna said, I know. तुम कुछ कर नहीं पाओगे। You cannot do anything. कुछ कर नहीं पाओगे। आगे आगे बात सही है कि This is true or not? यहाँ तक भी युद्ध प्रारंभ के पहले Before the beginning of the war, he came. Barbari. बर्बरी आ गया था। Barbari came जिसमें चैलेंज लगा एक सेकंड में and सारी में he made a challenge. He said, in 1 second, I'm going to destroy all the कृष्ण को छोड़कर armies except for Krishna. I'll destroy everyone. फिर भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश धारण करके उनके And पास Krishna आए। came in the disguise of a Brahman and said, oh yeah, can you do that? Show me. बोले एक सुंदर पेड़ And then there was a beautiful tree इसमें हजारों जो है with thousands of leaves. वो केवल दूब की घास So के he द्वारा took dove grass तीर और धनुष बना। and he made a bow and arrow made of grass. And he was able to pierce all of the leaves in that tree. All of them were pierced. बोले इसी प्रकार उनके विद्वान So this was his knowledge of bow and arrow, of archery. Sorry. So भगवान के ऊपर हमें निर्भर करना। we need to rely on God and surrender to Him. अभी कथा प्रसंग में So coming back to the Harikatha, और सुंदर so beautiful. भीष्म पितामह की इसलिए परीक्षित So महाराज Parikshit Maharaj, परीक्षित महाराज ये प्रश्न asked पूछा Shukadeva Goswami, पितामह में Pitamaho मेरे me, पितामह my grandfather, कुरुक्षेत्र रूपी विशाल in the great महासागर के सैन्य जो in the great है और जिस battle of Kurukshetra, which is विशाल like seas of सागर रूपी warriors, समुद्र में which is like a seas and seas of warriors, सेना यहाँ पर seas and seas, oceans of warriors, like so many soldiers. और उसमें कैसे मानो How बड़े बड़े सेना के उदाहरण देख रहे हैं How जैसे तिमी के बाण he was able to defeat घड़ियाल these के great बाण warriors, just like है? these भीष्म पितामह also big fishes कृपाचार्य also destroy, द्रोणाचार्य like a shark that Asat eats of the fish Tama and things like that. How he was able to ये समस्त बड़े बड़े very योद्धाओं को amazingly destroy all these warriors. How he did that? उस कथा को हम श्रवण करेंगे। है? बहुत सुंदर ये कथा प्रसंग है। और विशेषकर हाँ, और एक के नाम था क्या नाम जिसको जो बात करने के लिए वो
जयद्रथ जो Another person also very जयद्रथ भी वर प्राप्त किया था important was हैं? Jayadratha, because actually उनके Jayadratha सिर जो had कटेगा gotten a boon. और उसके Whoever सिर जो would ही kill him मिट्टी में पड़ जाए and cut his head, when his काटने head would वाले fall जो है on the वो ground, उसके the सिर person who कटने cut को his जाए head also his head तो would blow. जयद्रथ को मारने वाला कोई So है who would kill उसको ही जगा Jayadratha? दी इसमें Because if someone killed Jayadratha, then the person's head would be blown. क्या जयद्रथ को बंद कर सकते So Krishna said, "Can you kill हैं? Jayadratha?" महाभारत में कथा प्रसंग आ रहा You know that story from the है Mahabharata. हैं? बढ़िया है कि नहीं It's very nice, interesting, huh? भगवान ने Isn't it? Interesting. दिन में रात कर दी उसको चलने के लिए वो भी तो दिन को भी रात किया जयद्रथ को वध किया वध करने की वजह से उनको सिर को जो है So कहाँ फेंक दिया So उनके पिता के Jayadratha, when he was जयद्रथ के killed, पिताजी they के sent his head to हाथ the में lap, ही to the hand of his own father. उनके मुंडों की जो है सिर को जो है So the head of Jayadratha, after was killed, right? He was sent by the arrow to the hand of his own father, that his father was offering और water, देखो oblations. उसके सिर को लेकर के And कहाँ then फेंक the head of Jayadratha fell on the hand of his उनके own पिताजी के father. हाथ में। वो तब ऐसे And किया then तो when he उनके did the oblation, the पिताजी head of his son fell on the ground, and then his own father died. But his head ये was सब blown. किसने सिखाया So who explained all that? You know, these things was Bhagavan. हैं? वो गांधी के द्वारा Ifs कुछ and नहीं buts. होगा He knew all that. हैं? Gandhi wouldn't बात इसे work. किंतु अर्जुन के मन में That's ये true. एक But still, अहंकार Arjun, he था had his ahankar. कि मेरे पास He had गंदीव this है मैं ego. सबको परास्त He thought, I can destroy everyone with my Gandiv. He बहुत thought, बहुत सुंदर ये सब कथाएं very हैं। interesting. These Harikatha is very beautiful, very interesting. और वही भीष्म पितामह So की these कथा Bhishma Pitamaha. आपने जो So you भीष्म की स्तुति chanted his जब स्वयं stutis, भगवान Bhishma विष्णु stuti. भीष्म पितामह जब सर सज्जा में When Bhishma was विराजमान in the bed of arrows, और उस समय भगवान को देख करके उन्होंने कितने स्तुति आदि कर he made so many prayers to Bhagavan Shri Krishna. बहुत सुंदर ये है So और उस समय beautiful. भगवान की इतने सुंदर रूप को जो वर्णन The करते हैं, form of Bhagavan was so beautiful, and Bhishma described his form. अपूर्व है। यहाँ तक भी Unprecedented. जहाँ पर गोपी भावों की उन्हें स्तुति की Even he also mentioned Gopi Bhav. गोपी भाव की। Yes, he mentions Gopi Bhav. ललित गति विलास बंधु हास प्राण निखण कल्पितो कल्पितो मास कृतमुदो कृतस्य उन्मादो मोच। इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है। Beautiful, so beautiful prayers. This is hand पितामह भीष्म पितामह Bhishma Pitamaha. He is mentioning Gopi Bhav in his prayers. भीष्म पितामह just आपने बोला सो थोड़ा में Like he spoke, so I speak a little bit about it. भीष्म पितामह अर्जुन के साथ जब युद्ध कर रहे So when he was fighting Arjun, अर्जुन पराजित होते जा रहे Arjun was और about to be भीष्म defeated. पितामह ऐसे And then Bhishma Pitamaha, he was तीक्ष्ण बाण throwing very sharp arrows, very strong and sharp arrows. अर्जुन की And then सहन करना संभव नहीं। Arjuna wasn't able to stand, इसलिए भगवान ने जो to रथ चला रहे tolerate थे all those arrows. So उस रथ Bhagavan में was क्या करते थे? कभी moving the नीचे chariot of उठा देते। Arjuna, and sometimes Krishna would put the और chariot वो more बाण up आकर किससे स्वयं पर लग like देता this बकस to पर dodge बस the arrows. And then what happened? भगवान The कृष्ण के arrows would भक्त actually pierce the अर्जुन chest के of वो बाण Krishna. So the Arjuna, सहन करना the संभव नहीं है। अब Arjuna अर्जुन को wouldn't be बुझा। able to tolerate those भीष्म arrows पितामह के हाथ because जो Bhishma, बाण के बारे में वर्णन he was, किया। throwing the arrows, shooting arrows और देखो वो बाण very भी strong, भगवान की strongly. बकस तल में And जब then लगे when these arrows actually उसमें pierced the थोड़ा-थोड़ा chest of Krishna, रक्त actually, के बूंद भी दिखाई so पड़े। some drops of blood started also जैसे dropping, सुई के द्वारा just like made by यदि आप like a शरीर में needle. ऐसे करो, If you make तो with क्या needle होगा? like this, tick, 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 छोटा-छोटा piercing your छेद हो body जाता है with small, और small रक्त के with needles, बूंद दिखाई पड़ते drops हैं। of blood will start बोले dropping. भगवान एक भीष्म पितामह जब ऐसे So बाण when छोड़ने Bhishma लगे Pitamaha was shooting this और kind of arrows, कृष्ण के वक्ष स्थल में आकर the तो chest बाण of मानो Krishna was सुई completely के pierced, भांति just like needles, है needles ऐसे piercing, छेद लगे। pierce और like this. उसमें And then रक्त के बूंद so दिखाई many पड़ते drops of blood could और be उस seen. रक्त के बूंद को And देख then seeing करके these drops of blood, भीष्म पितामह इस Bhishma दीवार Pitamaha told this stuti, this verse. कितने सुंदर हो गोपियों की है भावना जो स्वयं कृष्ण वृंदावन में जो विद्यमान थे When Krishna was in Vrindavana with और the गोपियों के gopis, साथ and रास then विहार Krishna आदि was समय performing के Ras साथ Bihar, Rasa उनके Leela during the वक्ष night, and then the chest of Krishna कुमकुम द्वारा रंजित would be जो होता colored था, by the kumkum, उसकी स्तुति करते the vermilion of the gopis. थे। भीष्म पितामह So, आत्मा But Bhishma Pitamaha is a जिन्होंने celibate from प्रतिज्ञा की from birth.
a Kumar Brahmachari. फिर He विवाह promised विवाह भी never नहीं to करेंगे, get आप married and also राज सिंहासन में भी never to sit on the नहीं बैठे, throne. He क्योंकि promised, कुरुक्षेत्र took an oath. किंतु But उस सिंहासन में जो बैठेंगे he promised, उसके whoever प्रतिनिधित्व करेंगे, whoever sits on the throne, I'll represent, I'll support that person. पितृसत्य पालन किया। So this is what to fulfill the orders of his father. He wanted to fulfill the promise of his किंतु father. आज ये स्तुति कार्य इतने सुंदर And today भावना के देखो, he is performing this beautiful prayer to Shri Krishna in this beautiful mood. उसमें ही दो श्लोकों के द्वारा हमारे आचार्य से बात की, दो श्लोकों के द्वारा So इतना the सुंदर Acharyas वर्णन किया। explained so beautifully these है two तो अनेक verses. स्तुति है, He has many stutis, many verses. बहुत सुंदर लगा। He prayed like you sang, very nice. ये संत भगवान के अति सुंदर रूप तमाल वर्णम Tomala Varna. So त्रिभुवन कमनम तमाल this वर्णम verse is important here with description the form of Krishna. वरम वरम दधने बहु से अलंकृत कूल अननो अन्यन विजय सके प्रति वस्तु में कितना सुंदर है, So बहुत beautiful. सुंदर है, So beautiful. इतने सुंदर लगता है। Beautiful prayers of Bhishma. उस समय संत कह रहे हैं, And then Vishnu himself said, he described the beautiful form of Bhagavan with these two verses. He, भीष्म पितामह, Bhishma Pitamaha, he described the form of Krishna. ये दोनों श्लोक जो है These two verses are संग माधुर्य रस की Actually, एक संकेत देते they are हैं। indicating Madhurya Ras वो भी भावों की प्रकृति, to attain Gopi Bhav. ये कोई साधारण नहीं It's not an ordinary thing. है। जो ब्रह्म सुख भीष्म रक्षे रालकित नौससा पुरुष सस्य सद्दो विस्मरण चूर्ण अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती Our पाद, Pramananda Saraswati Pad in this verse, राधा रस सुधानिधि Radha ग्रंथ में Rasudanidhi, he describes. राधा जी की महिमा वर्णन He describes करके the पहली before कार्य glorifying Srimati Radhika. बोले राधा जी की क्या He वर्णन says, करें, what can I tell about her? बोले What can I राधा describe जी about her? जिस दिशा में Even विराजमान the है, direction in which she's in. दिशा को मैं प्रणाम I do करता हूं। pranam to the direction she's standing. बोले राधा जी की चरण कमल की रेणु व धूल कणा So प्राप्ति to attain करना the इतने दुर्लभ foot कार्य। dust of Srimati Radhika is जो so ब्रह्म rare, सुख और नारद so विष्णु rare. राधा Jo जी Brahma Rudra, राधा जो this verse नौससा explains. Jo Brahman, ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े जो महाजन का है, these great Mahajans, great स्वयंभू नारद personalities. शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि Vyasaki वयम। Varam. There are 12 Mahajanas, and Maharaj himself told this verse. He said there were 12 Mahajanas, great personalities. 12 Mahajans, not 13, but 12 great devotees. 12 Mahajanas. स्वयंभू नारद Swayambhu. कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि। Vyasaki Varam, Swayambhu, Brahma, Shiva, Narada, Kapil, etc. So Prabhupada Saraswati explains, Jo Brahma, Shuka, Narada, शब्दों में समझ सुनो अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। जो कृष्ण He के says, चरण कमल के the दर्शन feet of करने Krishna, के लिए ब्रह्मा actually so आदि rare. बड़े बड़े Even these देवता great लोग demigods, प्रभु they're performing austerities to have the darshan of the feet of जिनके Krishna. हृदय अत्यंत निर्मल Their है, heart is भगवान so के हृदय pure, निर्मल like the heart of Lord Brahma is so pure, और पवित्र immaculate, निर्मल हृदय रूपी spotless. आसन में And in the स्वयं heart, भगवान की in the चरण throne कमल of the को heart of स्थापित Brahma, करना चाहते हैं। he wants actually Brahma, किंतु Lord कभी Krishna, भगवान to की sit चरण on his कमल heart, right? प्रकट Brahma होते wants हैं, it, उनमें नहीं होते। but sometimes ऐसा Bhagavan हम appears कुछ in his बातें heart, नहीं sometimes not. करेंगे। Rupa Goswami wrote, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे कृष्ण देव भवन्तं अनुमानस मधुकरा मर्भय नीरपद पंकज कृष्ण देव
जद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कृष्ण की चरण कमल की नख की अग्रभाग की जो ज्योति उसके कहा जाता है मरीचि। Mariching. What is the meaning of mariching? Means a particle of the effulgence of Krishna's toenails. कमल की So Krishna has his lotus feet. His lotus feet has lotus nails. The lotus nails has the tip of his toenails has an effulgence. उसके भी प्रति करना ब्रह्मा And to get a particle of that, darshan is actually the aim of Brahma. Brahma is in samadhi. He just wants to have this darshan of the toenails, tip of the toenails. He wants to meditate on the feet of Krishna. बहुत गंभीर विषय है। This is something very deep topic. जद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। न तव नखाग्र मरीचि। जिनकी चरण कमल की नख चंद्रमा के जटा में है। So even the effulgence of Krishna's toenails is very hard to attain. Even Brahma, Lord Brahma, sometimes gets these opportunities, sometimes not. आपके नाखून में in your nails, you also have a divine effulgence, don't you? Like some shining coming. Everyone has a little bit coming in your nails. You can look at your hands. You see this like part of your nails, little bit some effulgence coming. Anyway, I'm just mentioning. तो भगवान की चरण कमल की नाखून की अग्रभाग की जो ज्योति जो है So और उसके कभी अपने हृदय में स्थापन कर पाते हैं कभी नहीं। Brahma wants to establish, like, for God to appear in his heart, the effulgence of his toenails in his heart. Brahma is not an ordinary person. Who is Brahma? Brahma is the first in the list of the 12 Mahajans. Swayambhu Narada Sambhu means Brahma, Narada, Shiva, Prahlad Maharaj, Janaka. So Jamaharaj said we are 12 Mahajanas. To be able to really meditate in the Lord is so hard. If your heart is not clean, God will not appear in your heart. If your heart is not purified, not pure, because Bhagavan only sits in a pure asana, Sinhasana throne, only in a pure throne. Brahmaji is saying, like Rupa Goswami is saying, even for Brahma it's hard to be able to see Krishna. And to see Srimati Radhika is even rare for this Krishna, which is rare to be attained even by these great pure devotees. So this verse of Radharasa Sudhanidhi says this. Srimati Radhika, what is she doing? With her arrows of her sidelong glance, she is controlling Krishna. With her sidelong glance. When Srimati Radhika is in man, sulky mood, and then to break her man or pacify her, Krishna, he comes to the door of the kunja, seeing her, Krishna, saying Krishna, Srimati Radhika closes the door of her kunja. And then Krishna, he comes outside of the kunja, like the doorstep. And then he's bowing his head, like he's again and again, doing pranam to the doorstep of the kunja, Please, please, look at me even once, please. So who is standing outside of the kunja? The Sakhis of Srimati Radhika. Rupa Manjari, like Rupa Manjari, Rati Manjari, Lalita, okay, everyone is outside. And in the end, at the end, Krishna falls at the feet of the Sakhis, Manjaris, and also he's rubbing his nose in their feet. This beautiful, beautiful praise in Radharasa Sudhanidhi. Shuklaji, have you read Radharasa Sudhanidhi?
मैं थोड़ा बोल दूं। So you spoke a little bit about it. Now you मान open की it, I'm अवस्था just में like ऐसे से also उठे। और describing उस this. समय राधा रानी So when Shrimati Radhika is a man, केवल वो झुरखा से हैं, छोटा by जो the, छेद होता है there's like कुंज fresh, है, like a उस small, कुंज से small देखते रहे holes कृष्ण that crack, की small, ऐसे small cracks in the kunja, and then भाव को। they can see अब what's वही happening मानो from आंखों outside के and आंखों inside. के द्वारा जब पड़ जाते हैं And when उनकी someone, तिरछी नजर से अर्थात when they राधा जी look at each other, की तिरछी actually with the sidelong नजर glance से of Shrimati Radhika, क्या होता है कृष्ण she विमूर्छित हो जाते she makes Krishna faint. He becomes unconscious. बोले राधा जी की तिरछी नजर रूपी बाण के So द्वारा the arrows of her sidelong कृष्ण glance के वक्षस्थल बीध जाते हैं are like they wound the heart of Krishna. Do you understand? और कृष्ण And then Krishna विमूर्छित falls unconscious. ऐसे से सुंदर वर्णन होती है This- जो रणक्षेत्र युद्ध So में this is like in the भीष्म battlefield पितामह के ऐसे इस बाण को जो when वक्षस्थल पर धारण किया था so Krishna he got the arrows of Bhishma on his chest, राधा जी की and then निकट उस कुंज but में जाकर के in front of Shrimati Radhika आज in the kunja, ऐसे गीत Krishna गा रहे हैं काकुति he गीत गा रहे was हैं। इसी तरह begging at जब her feet. बहु सो खोलु This काकु Krishna वाणी was so powerful नित्यं in परस Kurukshetra. पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधि विषवानु जाया तत्केलि कुंजे भवनांगन मार्जनी सम प्रभुदानंद सस्निपात करें उस Prabhupada कुंज Saraswati की explains, झाड़ू देना तो मेरा संभव नहीं for me it's impossible है to sweep कोई sweep कुंजों this के kunja. एक If झाड़ू I'm की एक able to सलाखा become होकर मेरे जन्म one हुआ। of the stick of the broom that's used झाड़ू in भी the नहीं है, kunja, झाड़ू not की the एक whole broom, सलाखा just one stick, one piece of the stick of the broom that's used to sweep this kunja. झाड़ू में कितने सलाखा होता है How many 150 sticks होगा और एक सलाखा होकर मेरा are in a जन्म broom, हो right? जाए At least 50 or 100. मेरे जीवन So if I am if I become one of the stick of the broomstick, like a broomstick of the that's used to sweep the floor of this kunja, my life is successful. तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी अभी जो बता रहे हैं So now I was ये saying रणक्षेत्र में that in the Kurukshetra भगवान के वक्षस्थल भीष्म पितामह के बाण battlefield, के द्वारा छिल the chest of Krishna was wounded by, छलनी के भांति छल it was like with और उसमें जो prints of blood, right? These drops of blood और coming out, देख करके and then seeing these भीष्म पितामह droplets उसके of स्मरण blood, करे। Bhishma Pitamaha was remembering this कितना सुंदर है Krishna with the gopis. So beautiful. भीष्म पितामह की स्तुति स्तुति गोपी भाव की So he's किंतु तथापि mentioning Gopi Bhava इनकी here. प्राप्ति नहीं की। But still, स्तुति तो किया। Bhishma, he prayed with this, like for this mood like this, but he गोपी never भाव thanked this इतने दुर्लभ कहा because जाता है। Gopi very Bhava rare। is so rare, very, very rare. एक तो ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी इसे प्राप्त Even करने Brahma and great demigods cannot attain this साधारण mood. जीव कहाँ से प्राप्त What to speak of a normal, ordinary jiva? करे? समय हो गया साढ़े Time is up. It's already 8:30, right? It was just the introduction. प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन I was just giving the platform of the Maharikatha. And time's up. तो मैं थोड़ा Because you like बोल ही देता हूँ। mentioned this किंतु देखो Bhishma Stuti, so I started also speaking about this. But his prayers are so beautiful. You even like feel like भाव crying भी if you बहुत read it गंभीर है because his bhavas, his moods are so deep, so समझने वाले deep. और समझाने वाले अतीव दुर्लभ Very hard, right? For find people that can understand this. आज बहुत उत्कृष्ट तो रसोई बनाया Like you cook very nice food, like kheer, sweet rice. You offer to Thakurji, वो भोग प्रसाद and this prasadam. ग्रहण कौन करे? Who will accept? Who will take this prasadam? आइए Please come, Prabhuji. इसलिए स्तुति बताते जा रहे Thanks. हैं ब्रह्मा आदि हमें कहने की तात्पर्य है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग So Brahma and the great demigods, महाजन जो वस्तु की प्राप्ति कर नहीं पाए they couldn't attain this. और उस वस्तु की हम कैसे प्राप्ति Well, करेंगे how can we attain that? बोले उसकी प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय There's है। only one way for us to attain बोले it. इस कलियुग में सज्जन बहुत उनके चरण में आ जाए If we surrender to Shachandana Gaura Hari, इसके चरण में to whose feet? Gaura वही Hari. स्वयं कृष्ण This राधा Gaura जी के Hari. भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए This Gaura Hari is actually Krishna who appeared with the mood and compassion of Shrimati Radhika. So
समर्पित we हो must जाए, surrender ourselves to यही the सब feet उसको of भागवत की प्राप्ति है। जता Mahaprabhu, जता then you're going to गुरु attain all that. पदार बिंदे बिंदे भक्ति हितपुण्य पुंजा तथा तथा सची हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज धाम्बुरास। कहीं जीवन में कोई ऐसे In our life, गौर प्रेमिक भक्त आपकी प्राप्ति हो जाए, if you attain the opportunity to associate with a devotee of Mahaprabhu गौर सुंदर के that चरण has में completely अपने surrendered को to the feet of Mahaprabhu, जब तक गौर सुंदर के चरण में समर्पित so नहीं like you करें, have to surrender to Mahaprabhu. Until कोई you do that, ऐसे उन्नत ब्रज you'll भाव never be able प्राप्ति to करना attain संभव नहीं। this Gopi हम नहीं Bhava, कर this highest mood. सकते। I'm not saying this. चैतन्य कृष्णदास Chaitanya कविराज Charitamrita कवि, Krishnadas शुक्ला Kaviraj जी explains. पढ़ ले, Shuklaji, please read it. हिंदी पढ़ ले, उसमें In लिखा है, Hindi, महाप्रभु Chaitanya से कहते हैं, Charitamrita Mahaprabhu "अमा said, बिना ब्रज प्रेम नहीं बनते किसी।" no one ये will give कलियुग Vraja है। Prema except for me. This is Kali Yuga now. इस कलियुग में वही सजनंदन गौर हरि This Sachidananda Gaur Hari in हरि this वही Kali Yuga. कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के आए। So, ये अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दिखे। is Krishna with the mood and compassion of Srimati Radhika, and he said, oh yeah, I will give Vraja Prema. Did you understand what I said? इस कलियुग में वो ब्रज प्रेम कौन प्रदान So who करेंगे? can give us Vraja Prema in Kali Yuga? सचिनंदन गौर हरि। Sachinandana Gaur Hari. कृष्ण भी नहीं देंगे। Even Krishna will not give. कृष्ण दिया, Oh, but कहाँ Krishna दिया? gave. Oh, where did he give? केवल ब्रज में दिया, He gave only in ब्रज के Vraj. बाहर नहीं। He didn't give outside the Vraj. वो भी ब्रज के किसको दिया? And in Vraj, he gave to whom? है? He ब्रज के gave वृक्ष लता to the हरि। creepers and the trees of Vraj. ब्रज के बाहर बिल्कुल But नहीं। he never distributed outside कृष्ण of जो Vraj. प्रेम ब्रज प्रेम दिया, Krishna distributed Vraj Prem है? वो ब्रज के अंदर ब्रज की, inside Vraj. जैसे आपने बहुत सुंदर Example, उत्सव मनाया, you बुलाया किसको? you made a celebration, and who did you invite for your celebration, for your party? Your friends, है? अच्छी तरह से खिलाया right? पिलाया, Then you दान feed them दक्षिणा very दिया। nice, you give donation, you give gifts, whatever. किंतु But for your और own, एक व्यक्ति like the people you know, उत्सव के अवसर someone को else, बुलाया, he's making a festival, and he's inviting everyone. जो सुन करके आ गए। Even he अब तो didn't like, he तो didn't even properly invite, he just like announced, like whoever heard can come, you know, ऐसे नहीं लोग invited, non-invited, everyone can come. उसी कहा जाता है So this is really अति उदार, very कृष्ण उदार generous है, person. ठीक है, Krishna is generous, yeah, है? true. यार चैतन्य महाप्रभु ने But क्या Lord कहा? Chaitanya, he is महाबदन अति उदार, Oti उदार हो। Udhar, means एक उदार really होता है generous, और or एक like उदार होता है। very एक generous. वदान्य होता है। So one और thing is एक magnanimous, महावदान्य। and some is कृष्ण like के लिए क्या कहा गया? generous or magnanimous or something like that. वदान्य। So Krishna is Vadanya, he's like और generous. चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या But हुआ? Mahaprabhu is नमो magnanimous, right? महावदन्नाय, Namo कृष्ण Mahavadanya. प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर अतिशय नमः। आज इस कलियुग में वो प्रेम जो है In this Kali Yuga, the Prem, भाई कृष्ण प्रदान नहीं करेंगे। Krishna will not कुछ give भी बोलो। Prem. Even if you try, लगी बात, I know this seems harsh or like to hear, like स्वीकार नहीं। be the truth, but it's true. हैं? स्वयं महाप्रभु का नाम नहीं करे, Mahaprabhu said, not me. स्वयं महाप्रभु करे, Mahaprabhu himself said, हमा बिना ब्रज प्रेम। except for me, no one will give Vraja Prema in this Kali Yuga. इस कलियुग में ब्रज प्रेम कौन देगा? Who will give Vraja Prema in Kali Yuga? Sachinandana Gaur Hari. हैं? आज चैतन्य महाप्रभु ब्रज के अंदर ब्रज के बाहर सबसे प्रेम। Mahaprabhu gives Prema inside Braj, outside विचार Braj. ना कोई लो। In this incarnation of Gaur Sundar In this Gaur, incarnation of he Guru did Sundar not Gauravatar, discriminate who is qualified or he who did not is discriminate who is qualified जाति or तक के unqualified. प्रेम दिलाए, जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की महावदन्यता की Rupa वर्णन Goswami, he करते हुए described the क्या लिख रहे हैं? Mahavadanyata, the great अनार्य generosity of जय Mahaprabhu. He चिराग wrote this verse. करुणावतीर्ण करो, समार्पयतु उन्नतोज्ज्वल रसं शभक्ति श्रियं हरिः पुण्यसुन्दर सदि कदम सन्धीर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। Rupa Goswami wrote this verse यही तो है। describing the great magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu. नमो Anarpita Charing महावदन्नाय, Namo कृष्ण Mahavadanya. प्रेम प्रदायते, और कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे अनर्पित चरिंग चिराग। He came to give that which hasn't been given in a long time. इस कलयुग Mercifully, में he appeared in this कृपा Kali करके Yuga. प्रकट हुए। He appeared mercifully द्वापर in जी this में Kali कौन आए Yuga. थे? Who came in Dwapara Yuga? Krishna. है? और द्वापर के अंत के बाद
And in the end of Dwampara, okay, Krishna left this world and went back to the spiritual world. At the moment when Krishna left this world, from that day on started the Kali Yuga. And as soon as Kali Yuga started, Kali Dharma also started, means the nature of Kali Yuga. I tell you honestly, okay, politicians or kings, okay, nowadays. So they also associate with the same kind of people, like the same kind of people will come. Example, you became a king or president or politician. You also will be with the other people in the same kind as you. Like you also have to give respect and like you have to also honor those in the same like the other politicians. True or not? Like politics, right? You have to. Or you give something to those who are against you. No, you have like you support those in the same party. So Kali Yuga came. Now is the time of Kali Yuga. So Kali Maharaj just said, okay, now it's my turn, my kingdom. Now it's my time. So his associates also came in Kali Yuga. Means, you know, these four irreligious things is the associates of Kali Maharaj. What is that? Dutam means gambling. Pana means intoxication, like drinking alcohol and other kinds of intoxication is the place of Kali. Illegally sex, stri means, and suna means jivahimsa means killing the animals, eating meat, etc. So this is like the associates of Kali Maharaj. Now it's time of Kali Yuga, of Kali Maharaj. So of course, if he's the king, then he has his associates of Otherwise, how would he would rule, right? His kingdom. So if you're a president or if you have a like a post, you're prime minister, you also bring your like group, the party, you know, the whole group, and they become your ministers and things like that. True or not? You tell me. Otherwise, they'll be against you. You know, like the opposite party will come. Like this meat eating, all these are the associates of Kali Maharaj because he's the king now. So they also come. Just like if you become a president, also you have your ministers, they are from the same party as you. So seeing the suffering of the Kali Yuga Jivas, Bhagavan became so sad. He thought, Krishna thought, so I left in the Dwapara Yuga and now started Kali Yuga. Very bad for all the Jivas. Seeing the state of the Kali Yuga Jivas, to deliver them, Bhagavatam. Mahaprabhu, Bhagavad Arka. So Bhagavan appears as the Bhagavatam, which is like a sun. What did I say? So the son of Kali Yuga is Srimad Bhagavatam, Bhagavata Arka. Arka means Bhagavatam is like a sun in Kali Yuga. Bhagavan appeared as the Bhagavatam, like the sun in Kali Yuga. With the rays of the sun of the Srimad Bhagavatam, Kali can be destroyed, the darkness of Kali. That's why in Kali Yuga, you shouldn't read any other book, like, means you cannot get as much benefit as you will have if you read Srimad Bhagavatam. That's what Gurudev said. So you have to take shelter of Srimad Bhagavatam. Bhagavad Arka. To understand Bhagavatam and to realize Bhagavatam, then Krishna himself appeared as Gaura Sundar. Very beautiful this katha. If you haven't taken shelter of Gaura Sundar, you won't be able to attain this topmost mood. Oh, Gaura Sundar came 500 years ago. And what about now? When did Krishna come? 5,000 years ago.
फिर Krishna left, and then भागवत प्रकट हुए, Bhagavatam ये क्या appeared. प्रकार है? भागवत भी So Bhagavatam is like सूर्य the प्रकट हुआ। the किंतु sun. भागवत भी सूर्य की कैसे हम So अनुभव how कैसे can we करें? realize the son of the Bhagavatam? उसके अनुभव कैसे? इसलिए How? चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट That's why हुए। Chaitanya Mahaprabhu वही himself कृष्ण appeared. राधा जी The के same भाव और Krishna कांति took the लेकर mood के and complexion of Srimati Radhika प्रकट हुए and appeared, और ये भागवत की कथा को जगत में and प्रकट he's किया। preaching this Bhagavad Katha in this world, फिर तो अभी जी दिख रहे थे manifesting Bhagavad Katha in this world. वो And you भी say, oh, but Mahaprabhu also चले गए। 500 years ago, he's not तो उस here भाव का हम anymore. कैसे प्राप्ति So करें? how can we attain this Bhagavatam हार गए now? गौर प्रेम और सार नवे से तरंगे जीवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गौर सुंदर के निज जन कहीं मिल So जाए। if you find a devotee, गौर pure सुंदर devotee of कहीं Gaura मिल Sundara, जाए। because Gaura Sundara already left, हैं? but if you find a इसलिए pure चले devotee गए, of कहाँ चले? Gauranga, बोले नहीं गए। did he महापुरुष go? स्वयं कह रहे हैं, Actually, he hasn't मैं gone, इस कलयुग Mahaprabhu, में because Mahaprabhu अंत actually तक himself said, मैं he said, रहूंगा। इस रूप में I'll stay always in तीन this रूप Kali Yuga in three याद रखना। forms. Remember the three forms. कि क्या कहते हैं लोग? Three forms. Which one? Nama Vigraha Swarup. नाम विग्रह स्वरूप। So Nama Vigraha Swarup, Mahaprabhu अपने himself माँ said, सूची माता के he बोले, told his "माँ, mom, Shachimata, he मैं said, कलयुग के अंत तक until the end of Kali Yuga, मैं तीन स्वरूप में सदा सर्वदा I'll always be in three forms. नाम Nama, विग्रह Vigraha, और and अपने स्वरूप। in my own form as well. नाम विग्रह स्वरूप कीर्तने कबू नहीं भेद। Nama Vigraha Swarup. नाम विग्रह Nama स्वरूप means और holy प्रसन्न names, नाम के रूप deity. में ही मैं सदा सर्वदा Especially in the form of the holy names, I'll always remain. गौर नाम। इसलिए गौर सुंदर के चरण में आप So we have to surrender to the feet of Gaura Sundara. अरे गौर सुंदर तो कहाँ मिले? So where to find Gaura Sundara? हैं? इसलिए कह रहे हैं, गौर प्रेमो रसार नवे सीतरंगी जीवाडुवे। If you dive in the ocean of Gaura Prema, you'll emerge in the हैं? ocean of गौर Radha सुंदर Madhav. के चरण में आप समर्पित So we have to surrender to the feet और of गौर Gaura सुंदर के Sundara. चरण में समर्पित होने के लिए But to do गौर that, जन के you must आश्रय take लेना shelter पड़ेगा। of a Gaura Jan, pure devotee of Mahaprabhu. हैं? गौर सुंदर के जन जो है उनके The चरण में associates आश्रय of लेना पड़ेगा। Mahaprabhu, you have to take shelter of them. प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए So, थोड़ी आप लोग उनके Do you think it's easy to meet the Prime Minister? ये जो है First, you have to get in touch with the PA, right? उनसे तो आपको अनुमति लेना You have पड़ेगा, to, मिलना पड़ेगा, to तब get प्रधानमंत्री consent of the मिलोगे। PA, and then you finally you can see the तो उसी प्रकार Prime जो है Minister. गौरजन So in the same way, Gaura Jan, है, गौर सुंदर के जन के चरण में you अपने को must समर्पित करना। surrender yourself to a pure devotee of Mahaprabhu, Gaura Jan. गौर सुंदर की And कृपा then हमें प्राप्ति है। You get the mercy of गौर Gaura सुंदर के Sundar. नित्य जन कौन है? Who is the Nitya Jan, eternal associate of Mahaprabhu? है? हमारे गुरु वर्ग कहा है। Our Guru Varga, our spiritual masters in the disciplic ऐसे succession. रूप गोस्वामी पाद, Just for example, like Rupa महाप्रभु Goswami, अत्यंत प्रियजन गौर है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के बाद after Rupa Goswami, Jiva Goswami Rupa Goswami so passed, dear to Raghunath Mahaprabhu, Das and then Goswami. Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, कृष्णदास कबीरा नरोत्तम Krishnadas श्यामानंद Kaviraj, श्रीनिवास, Narottam Srinivas. ये गुरु परंपरा की स्थापना This is the Guru Parampara coming. है। यदि वास्तव में किसी को ये गौर सुंदर के प्रेम को प्राप्ति करना If you want to है, attain the prema of राधा Guru Sundar, गोविंद के सर्वोत्तम को प्रेम को प्राप्ति करना the है, topmost mode of ऐसे गुरु Radha परंपरा Krishna, you have to come to this Guru Parampara. जहाँ तहाँ मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करने से It's नहीं not होगा, enough to कुछ take भी कर लो। to take initiation here लेकिन and there. पश्चाताप करोगे। One day you realize, बहुत लोग one day you repent. गुरु परंपरा के छोड़कर So many people leave the Guru Parampara, but one day you regret. हमारे गुरु परंपरा में Ah, your Guru Parampara, they say, गुरु परंपरा नहीं है। there's no Guru Parampara in this lineage of Bhaktivinoda Prabhupada. Some people say, प्रेम लगाते they blame Srila Bhaktivinoda Prabhupada's line, हैं, किंतु some समझ नहीं people. पाते। but they don't understand. इसे कहते हैं गुरु परंपरा जानो So you must very nicely understand about our Guru अच्छी तरह Parampara. से गुरु परंपरा के Guru बारे में Parampara Jana Bhalomati. समझने You have की to प्रयास करें। understand really well about the disciplic succession. जहाँ तहाँ मंत्र दीक्षा आदि It's- ग्रहण से नहीं होता। You won't be able to attain this prem if you just take initiation anywhere. No, you have to come to the proper Guru Parampara. इसलिए इसमें तो बहुत विचार दिया गया यदि किसको यदि ऐसे सर्वोत्तम प्रेम को प्राप्त So if you want to attain this topmost prem, इसमें तो विचार you must accept these conceptions, vichara. और नहीं तो अंत में Otherwise, in the end,
पश्चाताप करने You पड़ेगा। have to regret. फिर You कुछ will ना करने से कुछ नहीं regret. होगा। But हिंदी में क्या बोलते हैं? in Hindi, they say one thing like, दाना चुन गई। não dá pra chorar pelo leite derramado. पछताए तो Like after you regret, after something already happened, even if you regret, what to do? क्या होते हैं? चिड़िया जब चुन गई Chorar pelo खेत, leite derramado. In English? कृषक ने खेत जोता, Anyway, आज जोत करके है, और उसमें पानी भी डाला, तो फिर इसके बाद क्या कि बीज डाल दिया sorry, है, because कि anyway, 2-4 दिन इतने सूर्य के after तेज 2-4 ज्यादा days, हो गया, when too much sun is coming, Gurudev is explaining this proverb. सूख गया। Everything is dry. अभी तो मानो बीज Now the अंकुरित नहीं seed हुआ, won't sprout. बीज ऊपर पड़ा हुआ है, So the seed is there, है? but और ऐसे करते 1-2 महीने हो 1-2 गए, months passed. और इस समय सारे पक्षी आकर के And क्या then the करें? birds come and actually they eat all the seeds. Like you और put the फिर 2 seed, महीने but के बाद बारिश हुई, and then after 2 months the rain came. होगा कुछ नहीं होगा। Nothing will happen. Nothing will take बीज ही है place. ही नहीं। There's no seed anymore. इसलिए कहते हैं, इसलिए जो आप बता रहे हैं क्या बोले? So what are you saying? और पछताए, So the proverb in Hindi is saying like this. इसलिए कहा जाता है कि गुरु परंपरा के बारे में अच्छी तरह Okay, से so आप mentioning. समझ करके भजन करें। हैं? So you have to really well understand about the Guru Parampara, because नहीं after तो if you regret that, you're damned. Otherwise nothing. इसलिए आप तो यही बोलने के जा रहे था कि इसलिए स्तुति आदि जो कर रहे हैं, भीष्म So पितामह you described the जो Bhishma गोपी Stuti. भाव की स्तुति आदि कर He रहे हैं, described इस Gopi भाव Bhav. को प्राप्ति करने के लिए कि हमें चैतन्य गौर सुंदर गौर So to attain this, we have to come to the pure devotee of Mahaprabhu, Gaurajan. कहते हैं गुरु परंपरा Guru Parampara, Jano Bhalo Mate. अच्छी तरह से गुरु You should परंपरा very के बारे well में understand about the Guru Parampara. तो लाभ कुछ नहीं होगा। Otherwise you won't get anything. If you go here and there, no benefit. हम तो कहते हैं गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। Gurudeva Shandarayana Goswami Maharaj. साक्षात जो है रमन मंजरी He who is directly Ramana Manjari. समझा नहीं है। There's no doubt about that. हैं? जिसके स्वयं आज तक भी सेवा कुंज में जाए, Even today, मैं गुरु nowadays, if रक्षा you do सुनाता हूँ। to आज तक भी Seva सेवा कुंज Kunj, में I'll tell you जाए, some आज secret. भी चले Even जाए। even if you go tomorrow or today to the वो Seva Kunj in सेवा कुंज Vrindavan, के पुजारी the आपको जरूर Pujari of the बताएंगे। Seva Kunj, he will tell you the story. 100% he will tell you 2009 that in 2009, 8 or 9, परिक्रमा के समय in the time of Parikrama, where are you going? Please sit down. Sit down for 2 minutes. Where are you going, please? हम गुरुदेव के महिमा सुनो। Listen to the glories of Gurudeva. ये सब लोग आप जानते हो, तथापि जो है जो Even जानते though हैं, उनके लिए everyone भी बताएं। everyone knows जो this, जानते but हैं, if you वो don't भी know, सुने अच्छी तरह से। you know the story, and even if you don't know, also hear है, carefully. हम गुरुदेव के कार्य रमन मंजरी। Our Gurudeva is Ramana ये Manjari. हमारे लिए नहीं कहा। This is not ये me. It's not me who's साक्षात saying this. राधा रानी कैसे Shrimati प्रकट Radhika हुई। herself manifested these glories of Gurudeva. आज तो इसलिए कर रहे हो, Hear this आज carefully. अभी चले Even जाओ if कहाँ? now, today, if you go to the Seva Kunja in Vrindavan, सेवा कुंज में जाओ, उसके if you go to पुजारी Seva आज Kunja, भी पुजारी the है। Pujari will tell you आपसे this. जरूर श्री गुरुदेव की महिमा He will tell you the glories of Srila Gurudeva, of Srila Narayana Goswami Maharaj. है। 2009 8 के 9 In 2009 or 8, परिक्रमा चल ब्रजमंडल परिक्रमा चल। Brajmandala Parikrama उस was समय going on. गुरुदेव जो है At that time, Srila Gurudeva, साक्षात रूप में विराजमान थे गोपीनाथ he was directly present in Gopinath Bhavan, गुरु यहाँ पर विराजमान Gurudev's room, है। 11:30 बजे दोपहर के समय 11:30, सेवा कुंज की जो time of पुजारी lunch, आए, prasadam, and then कुछ प्रसाद the लेके। Pujari of Seva Kunja came with some prasadam. उस समय गुरुदेव At that time, Srila Gurudeva, है, अपने भजन आदि करके he विश्राम had में just taken prasad and he couple went to seconds take अभी rest. Just few seconds, he closed the door, गुरुदेव अपने few seconds ago. विश्राम के लिए He went to दर्शन rest. करते हैं। और ठीक उसमें पुजारी आ गए। And then the Pujari पुजारी came आकर के है, बोले मैं महाराज की and said, के दर्शन करना चाहता I want to have darshan of Maharaj. हूं। आप लोग जानते हैं माधव महाराज You जी know how Srila ब्रह्मा Madhav भी आ Maharaj, जाए, even if Lord Brahma would come, खोलेंगे नहीं। he would not ये open the नियम door. नियम है। The rule जिस is the तरह rule. गुरुदेव के लिए उतना Especially सख्त जो for है, Gurudeva, he was really strict in the rules for Gurudev's health. Because the doctor said after the prasadam, Gurudeva has to take rest and he shouldn't speak to anyone because Gurudeva was with some heart condition.
उस समय बोले बोलने लगे पूरा माधव महाराज जी बोले So Madhav Maharaj, महाराज की okay, साथ so the Pujari of Sevakunja came and told Srila Madhav Maharaj, I am the Sevakunja Pujari, I want to meet Shandarayana Goswami Maharaj. थोड़ा पैसा लेके And then Srila Madhav Maharaj offered some money. Okay, take this 500 rupees. No, I don't want that. I brought prasadam. पुजारी तो होता ही है उनके तो The काम ही pujaris, this is what they do, right? They always देंगे give some prasadam from the deity and they get some donation in reward. पैसा दे, बोले प्रसाद दो आप प्रसाद Take the prasadam. बोले नहीं आज तो मैं प्रसाद No, पैसा नहीं I don't दूंगा। want money today. I also, महाराज जी के I just हाथ came में to give you this prasadam, but I want to give in the hands directly of Maharaj. और माधव महाराज जी बोले Madhav Maharaj said, स्वयं ब्रह्मा जी आ even जाए if Lord Brahma would come, I wouldn't open this door. Gurudev will not give darshan. No. बोले शाम को आ जाओ 4 Come in the बजे evening. Come at 4 p.m. देखो पुजारी बेचारा So the poor pujari, he was waiting, and then finally, okay, he left. ठीक 4 So बजे exactly at 4 p.m. he came back, वही प्रसाद लेकर के आए। bringing that prasadam. और ठीक उसी समय And गुरुदेव exactly at that moment, Gurudev opened his door. ठीक 4 बजे Exactly at 4. बोलते गुरुदेव जब आए Gurudev तो came, पुजारी and Pujari गुरुदेव के हाथ में वो प्रसाद ले gave that prasad to Gurudev गए और कहने लगे and told. वो पुजारी स्वयं कहने लगे The आप Pujari जाओ himself सेवा said, कुंज में, बाद if you में go in बताएंगे। Sevakunj until now, he'll उन्होंने say, कहने लगे देखो स्वयं राधा जी आज मुझे साक्षात में सपने में आए Shrimati Radhika herself और came in बोले my dream देखो today, पुजारी and she told me, Pujari, ये हमारे जो प्रसाद जो है this prasada, इस प्रसाद को this तुम अपने हाथ this से my remnants with your own hands. You have to गोपीनाथ भवन go में to Gopinath Bhavan and give this महाराज to Narayana Maharaj because he's my very dear Sakhi. उनके हाथ में तुम दे दो। So you have to give with your own hands personally. You have to give this to him. हम लोग उस समय तो गुरुदेव की I was at that time तो ऐसे बैठे हुए थे। with Gurudeva, सब दर्द 4 p.m., right? So we are all there. गुरुदेव के आंखों से आंसू की धारा इतनी Gurudeva started crying so much. है। प्रसाद देखो See, पुजारी इतने ही तो बताया कि वो The Pujari मेरा said, राधारानी संग कहने लगी Shrimati Radhika कि herself वो told मेरा me, साक्षात Shandaran Goswami Maharaj is my friend, Sakhi, Ramana Manjari. और गुरुदेव Like, प्रसाद को He indicated that she indicated that he was Ramana Manjari. And then Gurudev took a little bit of और that उस प्रसाद prasadam. को जो है And सबको then गुरुदेव Gurudev distributed that prasadam to everyone who was there. हम इसलिए कह रहे हैं भाई हो सकता है So, आप लोग ने maybe और महाजनों की गुरुदेव गुरु वर्ग की भी कथा भी सुने हैं you may be किंतु इस साक्षात रूप में श्रील गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज ये साक्षात रमन मंदिर है Gurudev is directly Ramana Manjari, and there is no doubt about that. ऐसे गुरु परंपरा की So- प्राप्ति आप लोगों ने जो किया So if you attain this kind of Guru Parampara, if you got in touch with this kind of Guru Parampara, कितने सौभाग्य you are so fortunate, so और fortunate. ऐसे गुरुदेव की परंपरा के छोड़ करके कहीं और दूसरी And चली if you're जाए, living the Parampara of Gurudev and going मैं somewhere कहता else, हूं कि वहाँ I पे tell you, you are दुर्भागा संसार में no one as unfortunate as you in the whole world. No one as ऐसे गुरुदेव के छोड़ करके as unfortunate if you give up with the Parampara of Gurudev and go somewhere else. उनकी क्या प्राप्ति है What are you gonna take? What are you gonna get? इसलिए श्री गुरुदेव नानक So, Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, महिमा this is his glories. कितने इस्लाम में कीर्तन यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो केमो ने धरी दाम दे आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत की यदि गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जगत में प्रकट नहीं होते If Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj would not have appeared in this world, this topmost bhav of Srimati Radhika, मदनक को महाभारत Madanakya Mahabhav, who would have manifested this in this world? गुरुदेव की महिमा इतने न The होते glories of Gurudeva. In the past or in the future, no one is equal to Gurudeva. I also seen directly that the great sannyasis of Bhaktisiddhanta Prabhupada, वो जब मथुरा में आते when they used to come to Mathura, श्री गुरुदेव की महिमा कीर्तन they used to glorify the glories of Gurudeva and sing, ये Sri Narayana Maharaj is directly राधारणी की
नित्य सखी the Nitya Sakhi, eternal Sakhi of Srimati Radhika. जिसके नाम मैं बताता हूँ I tell his ये name. भक्ति सिद्धांत सरस्वती A disciple of Bhaktisiddhanta Prabhupada. His name was हैं? Bhakti Jivan Janardana भक्ति Goswami Maharaj. जीवन जनार्दन Srila Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj. सभा विश्वान नंदिनी He was always calling out Ra Vrishabhan Nandini and crying. So he used to do Govardhan Parikrama with him. So he himself told ये नारायण गोस्वामी महाराज Shandarani Goswami Maharaj, साथ he's राधारी की नित्य directly eternal associate of Srimati Radhika Nitya Manjari Sakhi. इसलिए हम इसलिए कह So रहे हैं I'm saying ऐसे गुरु परंपरा this kind of Guru Parampara. इनको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाओ Even if एक दिन आपको क्या करना If you give पड़ेगा up this parampara and go somewhere else, one day or काम another, करके you have to come back. आना ही पड़ेगा You have to come back. हैं? आने से आना ही पड़ेगा You have to come back क्योंकि ऐसी गुरु परंपरा because और कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं you will not find this kind of Guru Parampara elsewhere. इसलिए So पूरा गुरुदेव की परंपरा जो है the parampara of Srila Gurudev. के बारे में मैं क्या बताऊं What can I tell you about this parampara? इसलिए गुरुदेव की चरण आश्रय करके रहो। So you should always be under the shelter of बहुत Gurudev. लोग दूसरी संप्रदाय Many में people, चले जाते they हैं। want to go to different sampradayas. महिमा सुन करके They hear the glories of other sampradayas. कहते हैं जी अरे They say, गौड़िया मठ में इनकी oh, गुरु परंपरा नहीं there's no Guru Parampara in Gauriya Math. 10 साल के बाद छोड़ के जाना। And maybe after 10 or 20 years, कहाँ जाओगे? he wants to go out of. भक्तिवेदांत Yeah, you want to स्वामी go? महाराज Go. कहते Where you हैं, gonna where you gonna escape to? मंत्र देते हैं, वो Like, एक where do you think you can go somewhere else? Like, क्या बोलते हैं, except मछली from this पकड़ के- material world. पकड़ने के लिए Bhaktivedanta Swami Maharaj said that when the Guru gives initiation, it's just like the उसमें लगा दिया। that hook for fishing, you know. खा लिया, And then when the fish उसको अंदर में तो जाएगा, eats वो that कहाँ जाएगा? भूख bait, लग गई, he's actually gonna be hooked. आएगा। And then actually that fish can never go anywhere because the fisherman is gonna take him. खाने लगी। So Bhaktivedanta Swami बड़े Maharaj गुरु said एक होता है सद्गुरु, the एक Guru, होता है the bona कैसे? fide Guru, is the सबसे expert, the most expert बड़ा जो है किसान में fisherman. है। ये बड़े माछ को बड़े मछली को पकड़ने क्या करते हैं वो हुक में लगा देते So when the fisherman gets a big fish, हैं। the पता चल fish जाता है is ये कितना like बड़ी मछली है। takes the bait and it's वो hooked. मछली को And then जब the मछली fisherman जब खा लेता checks, है, उसमें oh, डोर this क्या fish करते is हैं? very big. So then he releases the ये line. डोर को छोड़ देते हैं। He ये releases. सब लोग उठाते नहीं हैं। He doesn't pull at once. टोटे बन जाए। Otherwise, maybe the fish वो will क्या करते हैं, try डोर to को go so much like strongly. और So he leaves और the उसमें वो क्या करते हैं, line, वो पकड़ let के it वो loose, go, and then the fish starts moving a lot, thinking that he's free, but actually the fish is already hooked, so actually he cannot escape, never, because did you understand? तो So उसी पोखर में the वो fish क्या करेगा? will be in that area, रहेगा। swimming. थक जाएगा, Finally, he'll become tired, right? So when the तो fish वो is किसान क्या tired, then the fisherman धीरे-धीरे pulls the line, and then the fish is able to come to be caught. So this is what's happening. You want to go somewhere else? Go. Those who have attained this kind of Guru Parampara, इसलिए नारायण गोस्वामी को गुरु पाए। Shandarayana Goswami Maharaj, under the guidance of Srila Gurudev, हम इसलिए कह रहे हैं I'm saying कि गुरुदेव की ऐसी महिमा this is the glories of Gurudeva, incomparable. ठीक है। और जितने भी आचार्य हैं, Of course, there are the acharyas, Guru Vargas. I do pranam to everyone. जिनको श्री गुरुदेव नारायण But गोस्वामी महाराज Srila Gurudev Shandarayana Goswami Maharaj, की जो महिमा, his katha, his glories are uncomparable. गुरुदेव की राधे राधे Jai Shri Radhe. गुरु गोविंद बोलो हरि राधे
वैष्णव वृंद की जय, समग्र भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, आज की आनंद की जय, शुक्ल परिवार की जय, महाप्रसाद की जय। सबको दे दीजिएगा आप अपने हाथ से। Does anybody who hasn't got Hari Nam, if they want mantra, if they want